हर्षिता भी है वैसे अभी क्लास में. मैंने ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड द आंसर की. देख ली थी ना आंसर की? यस ठीक है, मैम. ओके ग्रेट. ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी गुड नोट. एंड टुडेज टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन VSCPR which is valence shell. अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया क्या? हाँ कर दिया. ठीक है, VSCPR valence shell electron pair repulsion theory and last one is molecular orbital theory. ठीक है, do you remember these topics I have already told you in grade 11 when you were in grade 11. I have already है ना told you about these topics. ठीक है, तो why I am teaching these topics again? And can anyone tell me क्यों बता रही हूँ मैं दोबारा से ये? A short recap. Yeah, short recap plus these topics are very important. ठीक है, देखो केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट अगर मैं बोलूं इन केमिकल बॉन्डिंग दीज 3 टॉपिक्स हाइब्रिडाइजेशन, VSCPR थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. ठीक है, मैं आपको शॉर्ट रिकैप तो दूंगी प्लस वी विल डू क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इज बाय द एंड ऑफ दिस लेसन you will be able to revise the concept of hybridization including VSCPR theory and molecular orbital theory and solve the PYQs on the same. ठीक है, नम्रता, शिखा, आयशा एंड श्रेया प्लीज बी सुपर एक्टिव. नम्रता एंड शिखा तो रहते एक्टिव हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट टू आयशा एंड श्रेया. ठीक है, ओके. And number of questions have been asked from this topic, around 2 to 3 question. ठीक है, जब आप वो देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, you will find कि these topics are very important and frequently question have been asked from these 3 topics. ठीक है, so okay, start करें. Let's start from hybridization. तो बच्चा what hybridization से क्या मतलब है? तो basically your first point is hybridization is hypothetical concept. है ना, रियल में कुछ नहीं हाइब्रिडाइजेशन जैसा, ये बस सोचा समझा कॉन्सेप्ट है. हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय पॉलिंग एंड स्लेटर. फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, इसमें क्या होता है? इन हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड. ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड एंड टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. मैम हाउ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन? आई विल शो यू विद a little short YouTube video. ठीक है, so that you can understand easily what I am trying to say. ठीक है, this phenomena is known as hybridization. Yeah, you can also say process of intermixing. What is hybridization? Intermixing of atomic orbitals and ध्यान रखना, keep in mind atomic orbitals of equal or slightly different energy. ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी उनकी क्या होनी चाहिए? इक्वल और हैविंग डिफरेंट एनर्जीज. वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगी? कंबाइन होंगी एंड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग इक्विवेलेंट शेप एंड एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. तो जल्दी से राइट इन योर चैट बॉक्स व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन बच्चों. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? टेल मी. You can write in chat box as well as you can unmute yourself and tell me what is hybridization. Yeah, intermixing of atomic orbitals like 2s2p. ठीक है, जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे and they are leading to formation of new orbitals called hybrid orbitals. अच्छा, आप मुझे बताइए क्या 3s और 3d आपस में इंटरमिक्स होंगी? आर दे गोइंग टू बी इंटरमिक्स 3s and 3d? Yes ma'am. No. Why no? Because अभी मैंने क्या बोला? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज. जो एनर्जीज होनी चाहिए या तो इक्वल हो या कंपेरेबल हो. These energies 2s 2p की एनर्जी कंपेरेबल होती है, तो दे कैन इजीली इंटरमिक्स. बस 3s and 3d में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सॉरी 3s 3d मत लिखो, यहाँ पे लिखो 3s 4d.
ठीक है, ओके चलो आगे चलते हैं हम। या आप ऐसे बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो से मैम 2s एंड 3p आर नॉट गोइंग टू इंटरमिक्स। वाई? वाई? क्योंकि दिस बिलोंग्स टू 2s एंड दिस बिलोंग्स टू 3p, देयर इज सम एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट स्लाइड बच्चों, यहाँ पे मैं छोटी सी यूट्यूब आई प्ले अ शॉर्ट यूट्यूब वीडियो। ठीक है, तो गिव मी 1 सेकेंड, आई प्ले। ये क्या हो गया, 1 मिनट रुको बच्चे। किसी और ने भी स्क्रीन रिप्रेजेंट की हुई है क्या? Give me a second. Actually, I'm having some network issue from my side. Okay. Okay. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. Okay. Please थोड़ा सा ध्यान से देखना. Okay. जो मैंने definition समझाई है, ठीक है? Please try to understand with the help of this video. Clear? Okay. 1s and 1p orbital both are intermixed. Can you see that? Yes, ma'am. And then 1s and 2p orbitals to give 3 hybrid orbitals, sp2. I hope it is clear. Yes, ma'am. Great. Okay. So I'll share my class slide now. Okay. एक मिनट दो बच्चों. I don't know कि what is happening right now. Yeah. Okay. ठीक है. So I hope the definition is clear that intermixing of atomic orbitals of equal or slightly different energy. If I am saying कि 2s and 2p are going to intermix, ठीक है? If I am saying कि क्या 2s and 3p are going to intermix, तो answer is no. ठीक है? If you want to do the process of hybridization, to make sure keep in mind this thing that atomic orbitals which are going to intermix having equal or slightly different energies. ठीक है? Okay. There are some features of hybridization. The first feature is number of atomic orbitals combine is equal to number of hybrid orbitals formed. तो जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलने वाली हैं. फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकंड पॉइंट इज द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप. Second point. Third point is hybrid orbitals are more effective. Why we do hybridization? Okay, why we need hybridization? Because the hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbitals. It means hybrid orbitals are more stable than atomic orbitals. ठीक है, तभी हम क्या करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है ना, और बॉन्ड बनने से क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है, ओके. Fourth point, these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pairs and thus a stable arrangement is obtained. बच्चे, hybrid orbitals are arranged themselves in such a way that the minimum repulsion between electron pair and a stable arrangement is obtained.
समझ आई कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करेंगे कि उनके बीच में क्या हो, मिनिमम से मिनिमम रिपल्शन हो। किसके बीच में? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। ठीक है, तो वी वांट मिनिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इस वजह से वो अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करते हैं सो दैट देयर विल बी मिनिमम रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड वी गेट अ स्टेबल अरेंजमेंट। क्लियर है these 4 पॉइंट्स? ओके, हाँ जी, शिखा, आयशमा, नम्रता, और कौन है यहाँ पे? यस मैम। श्रेया, यस मैम। मंजुला। ठीक है, एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कैसे दिखाते हैं हम? इस तरीके से दिखाते हैं, एक छोटू सा लोब होता है, एक बड़ू सा लोब होता है, मतलब एक छोटा होता है, एक बड़ा लोब होता है। ठीक है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड ऑन वन साइड ऑफ न्यूक्लियस, इट हैज वन लोब रिलेटिवली लार्जर देन अदर एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, आपने देखा होगा भी यूट्यूब वीडियो में। ठीक है बच्चों, ओके, तो दीज आर some types of hybridization which we are going to discuss in this class. So your first hybridization is sp, your first hybridization is sp। देखो बच्चों, ठीक है, sp टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। ठीक है, these are 6 types of hybridization which we are going to discuss in this class। ठीक है, ओके। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन द हाइब्रिडाइजेशन sp which p orbitals are used, so your answer is px, py, pz। कोई भी यूज हो सकता है, px भी हो सकता है, py भी हो सकता है और pz भी हो सकता है, any of the three। ठीक है, इन sp2 px py है ना, या pz px और px pz, any two you can use। in case of sp3 px py pz, sp3d में ns ps py px py pz and d set square। keep in mind which d orbital is used in sp3 sp3d hybridization, dz square बच्चों। ठीक है, dz square वाली ऑर्बिटल यूज होती है। अभी मैं सारा कुछ सिखाऊंगी, डोंट वरी, कैसे निकालते हैं सब कुछ। इन sp3d2 dz square and dx square dash y square, in sp3d3 dz square dx square dash y square and dxy। क्लियर है ये? अब सुनो, ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों लिखो, हाइब्रिडाइजेशन नंबर कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन नंबर, राइट इन योर नोटबुक प्लीज, जिसने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, those who have already written in their notebook, so you don't need to write again। ठीक है, if you have not तो please write in your notebook। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर हाउ टू फाइंड, हाफ ऑफ, लिखो सभी लिखो, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीसीज, मोनोवेलेंट स्पीसीज। ठीक है, प्लस 4 and plus minus for charge। if there is negative charge on species then add +1, if there is positive charge on species then subtract -1। how ma'am, how? okay, निकालते हैं हम। let us say I'll take an example, BeCl2। can you tell me ki how many valence electron in beryllium? बेरिलियम में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन्स। या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम इज फ्रॉम बिलोंग्स टू ग्रुप सेकंड, बेरिलियम बिलोंग्स टू ग्रुप सेकंड, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। ये बेटा पढ़ रखा है ना पहले, आई एम गोइंग टू रिवाइज इट। ठीक है, ओके, मोनोवेलेंट स्पीसीज क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट मतलब जो एक बॉन्ड तो बनाता ही बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 2 4/2 2। इट मींस 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर इज 2, देन करस्पॉन्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन इज sp।
ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है बच्चों आपको, लाइक दिस। ठीक है, लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री होती है इसकी, इस तरीके से आपको दिख रहा है मेरे हाथ में। लेट्स से दिस इज बेरिलियम एंड दीज टू आर क्लोरीन्स। इसको कैसे दिखाओगे, पेन पेपर पे कैसे दिखाओगे, इस तरीके से। ठीक है, एंगल इज 180 डिग्री, एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, चलो एक तुम निकालो, PF3 का निकालो, तुम CH4 का निकालो, निकालो बच्चे हाइब्रिडाइजेशन, PF3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो सारे। How to find the hybridization of boron in BF3? मैम 3 3 आ रहा है, half of, okay, boron sp2 number of, hybridization. yeah, very good, number of valence electron in boron 3. ठीक है, तो 3 plus 3 6/2 is 3, तो sp2 hybridization कैसा होगा, कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। देखो इधर, मैं दिखाती हूँ आपको, देखो इस तरीके से दिखेगा। एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड। देखो बच्चों, एक सेकेंड, ये देखिए इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। बेटा प्लीज ट्राई टू बी सुपर एक्टिव, ठीक है, आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा पढ़ाने में। अभी एक दो स्टूडेंट ही बोलेंगे तो कैसे, क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगी, एंड 3 कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएंगे आज की क्लास में। ठीक है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो कैसे बनेगा, पेन पेपर पे कैसे बनाओगे, ऐसे दिखाओगे। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर एंड एंगल इज 120 डिग्री। क्लियर है, चलो ओके। ऐसे एक और क्वेश्चन करो, CH4 का मुझे बताओ, PCl5 का निकाल के बताओ हाइब्रिडाइजेशन। प्लीज फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन फॉर PCl5, CH4, SF6। प्लीज फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। CH4, PCl5 and SF6. I told you ना hybridization number, ठीक है, तो with the help of this formula you can easily find out the hybridization. CH4, PCl5 and SF6 निकालिए। वेरी गुड शिखा, मंजुला, नम्रता एंड श्रेया, विजय कुमारी एंड और कौन ज्वाइंड है यहाँ पे, आयशमा एंड घनश्याम। घनश्याम अगर आप 5:30 वाले में आते हो तो बेटा लीव कर दो ये क्लास, मैं मंडे को रिपीट करूंगी बेटा ये टॉपिक तुम्हारे वाले क्लास में। ओके मैम। ठीक है बेटा। हाँ जी, तो CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाली, क्या ऐसा कुछ आएगा, क्या ऐसा कुछ दिखेगा उसका अरेंजमेंट, क्या ज्योमेट्री इस तरीके से दिखेगी। दिस इज कार्बन एंड दीज आर 4 हाइड्रोजन अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो आई हैव टोल्ड यू ना कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेंड टू अरेंज देमसेल्व्स इन सच ए वे that there will be minimum repulsion between electron pairs। तो कैसे निकालोगे इसका, देख लो, उसी फॉर्मूले से निकालना, हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन 4 प्लस मोनोवेलेंट एटम 4, 8/2 4। तो 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज टेट्राहेड्रल, एंड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल इज व्हाट, बिटवीन दीज टू साइड एटम। देखो इन सब के बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28।
ठीक है. एंड व्हाट अबाउट PCl5? क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? sp3d. वेरी गुड. क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? Yes ma'am. Is it like this? Yeah. This is TBP, trigonal bipyramidal. कैसे निकालोगे? How to find this? Phosphorus. It is 5 valence electron in phosphorus and plus 5 monovalent. How many monovalent species? 5. 5 chlorine है, तो 10 by 2 5. And for 5 hybridization is going to be sp3d. ठीक है, देखिए. ठीक है, देखो पेन पेपर पे कैसे बनाऊंगी मैं, इस तरीके से. ट्रायंगल बाय पिरामिडल, इनमें एंगल 120 डिग्री है. ठीक है, ओके. तो देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन PCl5, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल. ठीक है, these two chlorine are located on axial position and these three are equatorial position. देखो इधर, here these two are, देखो बच्चों, these two जो कि 180 डिग्री पे प्रेजेंट है. ठीक है, these chlorine are present on axial position and those which are present at 90 degree angle, they are equatorial. Equatorial का एंगल 120 and the axial are 180. ठीक है, क्लियर हो गया? ओके. एंड SF6 के लिए कितना आएगा हाइब्रिडाइजेशन? टेल मी. sp3 to d2. वेरी गुड. sp3d2. दिस इज ऑक्टाहेड्रल. क्या यही सबके दिमाग में था? Yes Is this ma'am. your imagination? SF6. This is my central atom sulfur and there are 6 fluorines around central atom. Central atom. There are total 890 degree angle. 4 above the plane and 4 below the plane. Can you see that? थोड़ा आगे करूं मैं? Yes ma'am. देखिए, चल बहुत ही बढ़िया. ओके. देन आता है आपका VSCPR थ्योरी. VSCPR क्या है? बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में ही पढ़ाया जाता है. ठीक है, तो VSCPR थ्योरी क्या होता है? फर्स्ट वन इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड on the number of valence electron pair. If you notice, only valence shell electron are participate in hybridization. Did you notice that? Only valence shell electrons are going to participate in hybridization. So this is your first point. The shape of molecule की shape कैसे होगी? कि वो टेट्राहेड्रल दिख रहा है ना, वो ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है. Depend on the number of valence electron pair. बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड. नॉन बॉन्डिंग क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. Yes ma'am. Yes which ma'am. does not participate in bond formation. Participate in bond formation, जो फ्री होते हैं. These are free electrons, lone pair of electron in bond formation. ठीक है, okay. Around the central atom. Second one is pair of electron in valence shell repel one another since their electron cloud are negatively charged. है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी. ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को, सिंस व्हाई दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है. Third one is these pairs of electron tend to occupy such position in space that minimize repulsion, thus maximum distance in between them. ठीक है. Why they are like this? Why they are like this? क्यों ऐसे ये? ताकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके बीच में क्या हो? मिनिमम रिपल्शन हो. ठीक है, इसीलिए दैट इज व्हाई हम इसको किस पे लगा रहे हैं? 109 डिग्री के एंगल पे रख रहे हैं. क्लियर? Yes ma'am. Yes ma'am. And this one is also valence shell is taken as sphere with the electron pair localizing on the spherical surface at maximum distance from one another. ठीक है, वैलेंस शेल को आप एक स्फीयर की तरह कंसीडर कर रहे हो, जो कि क्या है? इस तरीके से. मतलब सिंपल है, जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं यही है, करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे दिया है. मेन पॉइंट्स आर 3 points. You have to just remember these 3 points. And the last one is repulsive interaction of electron pair decreases in the order. Lone pair सबसे ज्यादा repulsion, then lone pair bond pair, then bond pair. So keep in mind there is strong repulsion between lone pair followed by bond pair and bond pair. Sorry, क्या बोल दिया मैंने? लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, लास्ट बॉन्ड पेयर. ठीक है, मिनिमम रिपल्शन इज इन बॉन्ड पेयर. ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना, व्हाट वी डू, हमें लोन पेयर को इस तरीके से ओरिएंट करना है सो दैट मिनिमम रिपल्शन हो. ठीक है, देयर विल बी मिनिमम रिपल्शन. ठीक है, ओके. Can you see that? Can you see this table? Yes, ma'am. You see this NCERT table? I have already told you ना. If देखो, इधर देखो, bond pair and another one is lone pair. ठीक है, देखो, first one is linear geometry. I have already told you. इधर देखो कहाँ गया, ये रहा. देखो, if there is 2 bond pair, no lone pair, then geometry is linear. If there is 3 bond pair, no lone pair, then geometry is trigonal planar. And in case of 4 bond pair, when there is no lone pair present around central atom, then geometry is tetrahedral. In case of 5, when there is no lone pair, it's trigonal bipyramidal. And in case of steric number 6, when there is no lone pair present around central atom, only 6 bond pair are present around central atom, then geometry is Octahedral. These are clear? बताओ, is this clear? Yes, ma'am. हाँ जी, आयशा माँ, नम्रता, मंजुला. Yes, ma'am. Very good. Okay. Then we are going to discuss when lone pair is present around central atom. Is there any change in geometry? Yes. लोन पेयर के आ जाने से शेप में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा. ज्योमेट्री में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा. ठीक है, इधर देखिए, इफ देयर इज 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, then shape is bent shape, like this. Can you see that? Considering these are 2 bond pair and there is 1 lone pair, like this. This is lone pair, which I am showing you like that. ठीक है, जैसे for example we have SO3. Can you find the hybridization for this sulfur? Half of number of valence electron in sulfur 6. ठीक है, तो hybridization number is 3. तो क्या होगा, sp2 hybridization. sp2. लेकिन यहाँ पे ना ये गलत है, SO3 नहीं आएगा, यहाँ पे SO2 आएगा. एक मिनट रुको, इसमें ना एनसीईआरटी में प्लीज ठीक कर लेना. दिस इज SO2 एंड O3. ठीक है, प्लीज करेक्ट कर लेना. देखो, इन केस ऑफ SO2 hybridization of sulfur is sp2. It means 2 bond pair, 1 lone pair. How we will decide there are 2 bond pair and 1 lone pair? देखो ना, सल्फर के साथ साइड एटम कितने हैं, तो now these 2 atoms are going to be participate in bond formation. ठीक है, Yes, ma'am. like this, and 1 lone pair. ठीक है, and we know oxygen form 2 bond, then we can show it like this. ठीक है, तो this is trigonal planar, लेकिन shape is bent shape. ठीक है, when we are talking about shape, तो please hide lone pair. जब आप शेप की बात करते हैं तो प्लीज लोन पेयर को छुपा लो. देखो, फाइनल शेप ये दिखती है हमें, V shape बोल दो, you can say V shape or you can also say bent shape. ठीक है जी? Yes, ma'am. Okay, these are lone pairs. Next one is if there are
3 bond pair and 1 lone pair. In that case, shape will be trigonal pyramidal. Most common example is NH3. NH3, ये देखिए, this is your NH3 बच्चा, this is your NH3. मैं थोड़ा पास लेके आती हूँ. This is your NH3. This is trigonal pyramidal. 3 bond and 1 lone pair. While talking, देखो, when I am talking about shape, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लोन पेयर को छुपा लेना. अगर तुम इस लोन पेयर को हाइड कर लोगे तो शेप इज ट्राइगोनल pyramidal, but geometry is tetrahedral. There is difference between geometry and shape. In case of geometry, we will consider the lone pair, while in case of shape, we don't consider lone pair. हाँ जी. Yes, ma'am. Okay, now if there is 2 bond pair and 2 lone pair, then shape is bent like this. This is your water ka molecule. Water is most common example, having 2 bond pair and 2 lone pair. The shape is bent and geometry is tetrahedral. If 4 bond pair and 1 lone pair, then the shape is seesaw shape. अभी याद कर लो, इसके बिना काम नहीं चलेगा. This is very important बच्चे. If you don't know this, then you are not able to attempt any question related to hybridization. ठीक है? See here. एक मिनट, मैं अभी दिखाती हूँ सीसो. See here. This is your seesaw. This is seesaw. ठीक है? Yes, ma'am. सीसो. ठीक है, आगे चलते हैं. ओके, इधर देखो. When there is 3 bond pair and 2 lone pair, shape is T shape. Shape is T shape. T shape. And most common example is ClF3. When 3 bond pair and 2 lone pair are present, it is going to be like this. Can you see that? This is your T shape. Yes, ma'am. ठीक है? Okay. When there are 5 bond pair and 1 lone pair, the shape is square pyramidal like this. मैं दिखाती हूँ. This is square pyramidal. 5 bond pair and 1 lone pair. These are 5 bond pair and let's say this is lone pair, क्योंकि मेरे पास है नहीं ना. I don't have lone pair. ठीक है, इसलिए I'm showing like this. ठीक है, considering this pen is lone pair. ठीक है, okay. So when 4 bond pair are present and 2 lone pair, then the shape is square planar. Square planar. I hope it is clear. ठीक है, ये मैंने लास्ट उसमें भी दिखाया था जब आप मुझसे 11th में पढ़ रहे थे ये टॉपिक. ठीक है, ओके बच्चों. when lone pair is present around central atom, is there any change in bond angle? Yes or no? Bond angle is going to be changed when the lone pair is present around central atom. Tell me. Tell me. Anyone? Yes, ma'am. Definitely. देखो ना, SO2 में क्या है आपका in trigonal planar. Let's say this is your trigonal planar. Angle is 120. If there is lone pair on central atom, then there will be a lone pair bond pair repulsion. There will be lone pair bond pair repulsion, and because of the lone pair bond pair repulsion, bond becomes The angle will reduce. ठीक है. See, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? The reason being the lone pair bond pair repulsion is much more as compared to the bond pair repulsion, so the angle is reduced to 119.5 from 120. Earlier the angle was 120 when there was no lone pair present,
But when the lone pair is present around central atom, the bond angle reduced to 119.5 from 120 degree. Why? Because of lone pair bond pair repulsion. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, Shika, ma'am. Namrata, and remaining students of mine, Manjula, Aisha Ma, Shreya. बेटा थोड़ा सा रिवाइज करके आया करो घर से, है ना? And next one is ammonia. In ammonia also there is one lone pair. So in this case as well, ki in this case also there is lone pair bond pair repulsion. So the angle Yes, ma'am. is 107 degree. Earlier it was 109.5 when there was no lone pair. Now the angle is reduced to 107 degree. Why? Why? Because of repulsion between lone Lone pair pair, and bond lone pair pair. repulsion. If there are two lone pairs present on the central atom, then angle is much more reduced. है ना? Even less than 107 degree. देखो, the angle is 104.5 degree. It means, Yes, ma'am. क्या हुआ? If hybridization is same, but the number of lone pair increasing, then bond angle will be less. Decreases. Yeah, bond angle decreases. ठीक है, हिंदी वर्जन चाहिए क्या? अपनी देसी भाषा भी चाहिए क्या? तो बताओ. ठीक है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना. यू नो, मैंने अभी बताया आपको, इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. लाइक दिस, देखो इधर, टू टाइप ऑफ बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड्स एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. ठीक है, सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट लोन पेयर, तो मेक श्योर एंड प्लीज कीप इन माइंड कि लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई in the equatorial position in Equatorial. case of sp3d, because we want minimum repulsion between bond pair and lone pair. Bond pair. So जो लोन पेयर होगा वो किस पे जाएगा बच्चे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा. ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले A is more stable या B is more stable, तो our answer is B is more stable. B. Why? क्योंकि in case of B, the lone pair is occupy the equatorial position, while in case of A, lone pair is present on axial position. And in case of axial position, if lone pair is present on axial position, then it face 390 degree bond pair lone pair repulsion. While when the lone pair is present on equatorial position, it faces only 290 degree lone pair bond pair repulsion. So which one is more stable according to you? B. B वाला. B. ठीक है, and same for ClF3. ठीक है, ClF3 में भी there are two lone pair around central atom in case of T shape, and the two lone pair occupies the equatorial position in order to minimize the lone pair repulsion. Clear है? So first one is Yes, ma'am. equatorial पे है lone pair, and in second one lone pair is on axial, and the second another one is at equatorial, and in last one both lone pair axial. So more stable is equatorial, then axial, then axial. Stability order. I hope I have made it clear, bachcho, in English. Yes, ma'am. Okay, try to solve this question. 9 PM तक हम क्वेश्चन करेंगे. We will do practice question up to 9 PM, and after 9 PM we will start the next topic, which is molecular orbital theory. ठीक है, please try to solve this question बच्चों, and if you know the answer you can speak, you can unmute yourself. Aisha Ma is saying 2, and Namrata, Shikha 2, Manjula is also saying 2. जब सारे Yes, ma'am, 2 two. देंगे तब मैं आगे चलूंगी. Shreya Ma'am, has option B. very good, proud of you बच्चों. Do I need to explain?
No, ma'am. Okay. So the answer is 2. Okay, do this question. Question number 2. Well done, Shikha. Very good. Very good, Namrata. Shabash. Very good. Shabash. Manjula, very good. Aisha Ma. Aisha Ma and Shikha. Ma'am, option C. Option C. Very good. Yes, ma'am. Lone pair repulsion सबसे ज्यादा, followed by lone pair bond pair and bond pair bond pair. Appreciate yourself. जल्दी करो, मैं भी कर दूं. Very good. So try to solve this question. This is Answer B. NH2. This is NH2 negative beta. ठीक है. Ma'am, answer D. D. D for dog ना. Yes, ma'am. D. PCL3. Okay. PCl3. It's PCl3 बच्चा. ठीक है. PCl3. हाफ ऑफ कैसे निकालोगे? हाफ ऑफ. वेरी गुड श्रेया. अरे क्या बात है, तुम 6 तो टॉपर निकले भाई, है ना. यू ऑल आर टॉपर. ठीक है. हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीसीज 3. 8/2 4 sp3. It means 3 bond pair. Why 3 bond pair? Because there are 3 side atoms, 3 chlorine. So these 3 chlorines are participate in bond formation and 1 lone pair is on central atom. ठीक है. Can you find Yes, the ma'am. hybridization for nitrogen in NH2 negative? Yes, ma'am. निकालिए. Please find out. The answer is D. That is great. But please find out the hybridization of nitrogen. Ma'am, sp2 hybridization. sp2. एक बार फिर चेक करो. sp3. शिखा, एक बार फिर चेक कर बेटा. Ma'am, sp3. sp3. Okay, the number of valence electrons in nitrogen is 5 plus monovalent 2 and -1 के नाम का +1. +1. For -1 add +1. If -2, अगर -2 होता, ठीक है, तो +2 करते हैं. ठीक है. तो 5 + 2 + 1 कितना हो गया? 8/2 5. 8/2. 8/2 4. So sp3 hybridization is sp3. 2 bond pair and 1 lone pair. ठीक है. चलो. क्लियर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 bond pair and 2 lone pair, है ना. 2 bond pair इस तरीके से देखो बच्चा, इस तरीके से 2 bond pair and 2 lone pair. चलो next. Okay, try to solve this question. Question number, I don't know which one is this. Okay, which of the following is not isostructural? But what is isostructural? क्या होता है isostructural? Same structure. Having same shape and hybridization, है ना. Having same shape and hybridization. निकालो. Ma'am, answer D. D. SCl4. D. PO3. PO4 3 नेगेटिव. एक बार बाकी भी निकालो. PO4 3 नेगेटिव तो नहीं लग रहा मुझे. Ma'am, option D. बेटा इसमें तो यही आ रहा है ना, 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर.
So D option is isostructural with the SiCl4. Check this one, beta. Option B. Half of Ma'am, option B is the answer. B आ रहा है ना. हाँ. सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 4 10/2 5. 4 देखो 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d है ना. एंड मैंने क्या बोला, आइसोस्ट्रक्चरल आर दोज स्पीसीज हैविंग सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन इसका चेंज हो गया है ना. तो दिस इज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल विद SiCl4. क्लियर है क्या? शुड आई रिपीट? टेल मी. Aishama, Manjula, Shikha, No, Namrata. ma'am. Okay. Shreya. Okay, do this question. Next one. In which of the following molecules all the bonds are not equal? अभी बताया था. Tell me. बताओ. In which case the all the bonds are not equal? किसमें नहीं होते हैं bond length equal? किसमें नहीं होती है? In which case all the bond lengths are not equal? Ma'am, answer B. ClF3. Ma'am, option A. Option A. Option A. Option A is pyramidal ना, NF3. शिखा Option चेक B. करो एक बार. ऑप्शन बी. sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ना शिखा. Yes, ma'am. ClF3. तो बी. ए क्यों बोला है ना. देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल. इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, NF3 is sp3, PF3 is sp2 and AlF3 is sp2. Yes, ma'am, got it. Great. Okay, to the question number this one. Which of the following pair of compounds is isoelectronic and isostructural? मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर दूं. IF3, this one is XCF2 and this one is IBr2 negative. ठीक है. Do you know the term isoelectronic? पता है? No, ma'am. हाँ, isoelectronic भूल गए. Having same number of electrons. Having same number of electrons. Check करो. You can also check the number of valence electron. If the number of valence electron is same, then you can say कि that particular species is isoelectronic. कर सकते हो ये क्वेश्चन. हाँ जी. मंजुला, शिखा, are you all able to do this question? Yes, ma'am, trying. Okay. I got my answer. चलो तुम करो ट्राई. मुझे तो मिल गया मेरा आंसर. हिंट चाहिए? डू यू वांट हिंट? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, तो check option B first. Check option B first. Then tell me. बच्चों, I started the class at 8:10 p.m. So I will extend the class by 9:40. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? No, ma'am. Okay. Okay. Please check option B.
एक काम करते हैं, आई ट्राई. Yeah, you can leave if you have train at 10 p.m. Okay, तो मैं करती हूँ ये सोल्व. इधर देखो, in case of IBr2 negative, hybridization of iodine, tell me. Half of how many valence electron, Aisha, mein in case 7. of iodine? Very good. 7 plus number of monovalent atom 2 plus 2. so 7 plus 3 10, 10 by 2 5. It means 2 bond pair and 3 lone pair. 3 lone pair. Okay, in case of XCF2, half of number of valence electron in xenon group 18 element 8 plus 2, so 10 by 2 5. It means 2 bond pair and 3 lone pair. Both are having same hybridization sp3d. And what about shape? Yes, Both ma'am. are linear shape. मैं बनाऊं? Okay. देखो, this is IBr2 and equatorial position पे क्या होगा? Lone pair, like this. And in case of XZF2, same shape, linear shape. तो बताओ. Option B. Option B. You can also find out the valence electron. ठीक है, एक बार निकाल के देखते हैं. ठीक है, आयोडीन में वैलेंस होते हैं 7, ब्रोमीन में भी 7 होते हैं, तो 7 2 14, 14 प्लस 1, तो 15 और 7 22 इलेक्ट्रॉन्स है ना in IBr2 negative. Check in Yes, this ma'am. case how many valence electron in xenon? 8. And in case of fluorine कितना होता है? 1s2 2s2 2p5 7 7 2 14, 14 plus 8 is 22 electrons. 22. So both species are isostructural as well as isoelectronic. So I hope you have this term clear कि isoelectronic क्या होता है and isostructural का मतलब क्या होता है. Meaning clear? Yes, ma'am. Very good. ठीक है. Okay, this is your homework. अब तुम्हें क्या करना है? कितने क्वेश्चन छोड़े मैंने तुम लोगों के लिए? 1 2 3 4 क्वेश्चन. ठीक है, this 4 question is your ठीक है, ठीक है, these 4 questions are your homework. ठीक है बच्चों, चलो next moving to next topic which is molecular orbital theory. बच्चों, can you see this picture? In this picture I am trying to show when two atomic orbitals combine. In case of hybridization या in case of valence bond theory, we were talking about overlapping of orbitals. Do you remember कि in case of valence bond theory और hybridization, ठीक है, हम किसके बारे में बात करते हैं? Overlapping, है ना. हम कभी से Yes, yes, ma'am. भी से कि और atomic orbitals are going to combine. ठीक है. अच्छा, अगर आपको याद हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता था? सिर्फ ओवरलैपिंग होती थी, नो न्यू ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, कोई नई ऑर्बिटल फॉर्म्ड नहीं होती थी. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इन दिस केस न्यू ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल न्यू ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड. एंड द नेम ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स इज, फर्स्ट वन इज बॉन्डिंग, लिख दो, bonding molecular orbital, and second one is anti-bonding molecular orbitals. Do you remember? ऐसा कुछ पढ़ा था molecular orbital theory में? ठीक है. Yes, ma'am. In case of molecular orbital theory, one is bonding molecular orbital and anti-bonding. Bonding molecular orbitals are lower in energy and more stable, while anti-bonding molecular orbital are higher in energy, and these are less stable than bonding molecular orbital. ठीक है. We represent the bonding molecular orbital by sigma, pi, and anti-bonding को हम दिखाते हैं sigma star, pi star. These star represents the anti-bonding molecular orbital. Yes, ma'am. Clear? Do you remember in case of atomic orbitals we filled electrons in 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Yes, ma'am. Now we are going to fill the electrons in
molecular orbitals, like in sigma, pi, sigma star, pi star. Bus. This is the main difference between molecular orbital and the one which we had discussed in atomic orbital wala case. Okay? Okay, so first, bacha, there are some silent features of molecular orbital theory which you should know. First one is in molecules, because we are going to discuss about molecules. So in case of molecules, electrons are present in new orbitals, which we call as molecular orbital. And just like as in case of atomic orbitals, abhi maine bataya, in case of hybridization, only those atomic orbitals are mixed having equal or slightly different energies. बिल्कुल same इसमें भी होगा. Molecular orbitals are formed by combination of atomic orbitals of nearly same energies and proper symmetry. Clear है ये वाली point? And third one is molecular orbital are not associated with any particular atom but belong to nuclei of all the other atom constituent the molecules, because in molecular orbital there is no one atom, है ना, there will be more than one atom. ठीक है, so molecular orbital are not associated with any particular atom but belongs to nuclei of all atoms constituent the molecule. Fourth one is just like as in hybridization. क्या था hybridization में? What was in that? कि the number of atomic orbital is equal to number of hybrid orbital. Yes, In the ma'am. same way, in the number of molecular orbital is equal to the number of atomic orbital. Like we have 1s orbital of hydrogen and we have another 1s orbital of hydrogen. When they intermix, there are two new orbital are formed. Sigma 1s and another one is sigma star 1s. This one is bonding molecular orbital and upper one is anti-bonding molecular orbital. Clear hai? That is why I am saying that the number Yes, of ma'am. atomic orbital is equal to number of molecular orbitals. ठीक है? And bonding molecular orbitals have lower in energy than molecular orbital. Can you see that? This bonding molecular orbital has lower in energy than atomic orbital. And anti-bonding molecular orbital has higher in energy than atomic orbital. Can you see that? This one is bonding molecular orbital. This is atomic orbital and upper wala anti-bonding molecular orbital. Can you see Yes, the ma'am. energy difference? Yes, ma'am. बाकी बच्चों, it means if I am writing the energy order, anti-bonding molecular orbital has higher in energy than atomic orbital and last में bonding orbital. Clear? हाँ जी, नम्रता, शिखा, आयशा माँ, Shreya, Yes, I ma'am. hope I have made it clear. ठीक है? Okay. Now we are going to fill the electrons, है ना, in this molecular orbital. So we have to follow rules, some rules. ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. ऑफर रूल, पोलिस एक्सक्लूजन एंड हुंस रूल. क्लियर है? Do you remember na these three rules of Bohr, Polis, Hund's rule? I have already told you in my previous class. Yes, ma'am. Okay, now moving to next electronic configuration for homoatomic diatomic molecule. ठीक है? Okay. तो please write in your notebook. अगर पहले से ही लिखा हुआ है तो you don't need to write again. ठीक है? तो first is when molecule having electrons less than or equal to 14. जब मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन 14 या उससे कम होंगे तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? लिखिए बच्चा. सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py. These are degenerate orbitals. ठीक है? And last में sigma star 2pz. So these order we are going to be followed when the molecule having electron less than or equal to 14.
let's say if I'm talking, let's say an example, एक काम करते हैं, let's take an example C2. How many electrons in C2, Aishama or Namrata? You can also tell me how many electrons in C2. Tell me how many electrons in C2. कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 6. तो 6 to the 12 electron. Yes, ma'am. Okay, so try to fill in this electronic configuration 1 2, and you know na, an orbital contain maximum 2 electrons and should be a positive spin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, because these are degenerate. So according to Ohm's rule, first we will uh, fill single electron, ठीक है, then pairing start होगी like this. क्लियर है? देखो, Yes, ma'am. ग्रेट, इस तरीके से फिल कर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नाउ यू कैन फिल फॉर एनी मॉलिक्यूल. ठीक है, having electron less than or equal to 14. Second, when molecule having electron greater than 14, so the electronic configuration order will be sigma 1s, then sigma star 1s, यानी कि first electron is going to be in sigma 1s, then sigma star 1s, followed by sigma 2s, sigma star 2s. In this case sigma 2pz जो है वो पहले आ जाता है. ठीक है, sigma 2pz, then pi 2px, pi 2py, then pi star 2px, pi star 2py, and then sigma star 2pz. This order we will follow when the molecule having electron greater than 14. Like example O2 है ना, and F2, Ne2, and when the electron having electron less than equal to 14, example कौन कौन से होंगे? N2, C2, B2 है ना, Br2. हाँ H2. ठीक है, ये सारे क्लियर हो गया? Yes, Okay. ma'am. Now the question asked in exam, ठीक है, तो you are given some example, मतलब some molecules, and question तुम्हें बोलेगा कि please find out the bond order, या वो पूछेगा बताओ which of the following having bond order 2, 2.53, और ये भी पूछ सकता है question में भी asked कि whether the species is paramagnetic, है ना, which one is paramagnetic, which one is diamagnetic. So these questions are very popular in exams. So there is a trick to find out the bond order and magnetic behavior of species. ठीक है, ओके. तो बेटा देखो, फर्स्ट वन इज, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, अगर तुम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मेथड से जाते हो, ठीक है, देन यू कैन फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. Bond order is equal to half of number of electron in bonding orbital minus number of electrons in anti-bonding orbital. है ना? And you can also tell the stability of species. How? If number of electron in bonding orbital is greater than number of electron in anti-bonding, then molecule is stable. Clear है? And if number of electron in anti-bonding is greater than number of electron in bonding orbital, then molecule is unstable. Why? Because anti-bonding molecular orbital is higher in energy. Higher in energy matlab less stability. And if Nb is equal to Na, if number of electron in bonding is equal to the number of electrons in anti-bonding, then molecule does not exist. Clear hai? Clear hai बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
Okay, now the trick क्या है मैम वो तो बता दो. The trick is please write down in a notebook number of electrons. Number of electrons. कैसे लिखोगे? In middle, please write 14. Please write 14. ठीक है. जैसे जैसे आप राइट में जाते जाओगे लिखो 20 तक काउंटिंग करनी है आपको. 15, 16, 17, 18, 19, 20. And when you are going to left side तो 10 तक करनी है. 13, 12, 11, 09, 10, 09, 08. वेरी गुड. 8 तक जाना है इन लेफ्ट साइड एंड 20 तक जाना है राइट हैंड साइड. क्लियर है? दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ बच्चा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यहाँ पे लिखिए बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर. Please remember the molecule which are having 14 electron. The bond order is 3, like N2. Bond order of N2 is 3 na. So please remember this. ठीक है. 14 electrons corresponding to 14 electrons, the bond order will be 3. ठीक है. So when you are going to left side, please subtract 0.5, 0.5. How? 14 to 15 electron, bond order decrease by 0.5. When you are moving to 15 to 16, bond order again decrease by 0. Like this. 1.5, 1.0, 0.5 and 0. In the same way, when you are moving to left hand side, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0, 0.5 and 0. Same in both sides. ठीक है. These are bond order. If examiner asked, please find out the bond order of N2, O2, O2 2 negative. ठीक है. N2 negative है ना. C2, B2. You can easily find out with the help of this trick. है ना. Just find the number of electrons. How many electrons in N2? 14 electrons. So bond order is 3. How many electrons in O2? 16 electrons. It means bond order is 2. In C2, how many electrons? 12. Bond order is 2. 2. In O2 2 negative, there are 18 electrons. So bond order is 1. In N2 negative, total electron is 14 plus 1, 15. One bond order is 2.5. In case of B2, there are total 10 electrons. Then bond order is 1.0. बोलो. है ना. We can easily predict the bond order within around 10 to 12 seconds. Yes, ma'am. ठीक है. Okay. So we can easily find out the bond order. ठीक है. Okay. And but please remember these electronic configuration as well. In 2023, question asked, in which of the following, which electronic configuration is correct for N2? अभी तक पता है नम्रता? क्या बात है. ठीक है. चलो, एक और क्वेश्चन कैसे आता है? मैग्नेटिक बिहेवियर का आता है क्वेश्चन. मैं यहाँ पे लिख दूं मैग्नेटिक बिहेवियर. मैग्नेटिक बिहेवियर मींस वेदर द स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक या तो पैरा है या डायमैग्नेटिक. डाया मींस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड पैरा मींस एट लीस्ट one unpaired electron. Remember? Yes, ma'am. And the molecule having 10 electrons, 16 electrons and odd electrons. They are paramagnetic species. And इनके अलावा जो भी होंगे then they belong to diamagnetic. Clear? ठीक है. तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में. फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर वाला, सेकंड वन इज मैग्नेटिक बिहेवियर वाला एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी पूछ सकता है वो. ठीक है. नाउ वी विल डू क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. दिस कम्स फ्रॉम नीट 2018. 2018 से है ये क्वेश्चन बेटा.
Try to solve this question within 10 to 15 seconds. Cn plus, Cn नेगेटिव है, NO है एंड Cn है. ठीक है. हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? B1. B. Cn minus, आयशा मा? CN negative. Yes. Very good, because Cn negative has 14 electrons. ठीक है. Cn negative has 14 electrons and bond order corresponding to 14 electron is 3. जबकि इसमें क्या होंगे? कम होंगे तीनों में. क्लियर है? तो yes, correct option is B. Very good मेरे बच्चों. Which one of the following pair of species have the same bond order? Ma'am, B. B. शिखा, नम्रता, मंजुला. अच्छा मंजुला तो Ma'am, option B. श्रेया जी. Okay, option B. Yes, both are having 14 electrons. If the number of electrons are same, then the bond order would also same. ठीक है? Okay. Try to solve this question. Which of the following is paramagnetic? बच्चों प्लीज डोंट लीव द क्लास, है ना. जब मैं कहूँ तब लीव करना, बिकॉज आई विल शेयर माई डाउट सोल्विंग ग्रुप, है ना. यू कैन ऐड इन दैट ग्रुप एंड आस्क योर डाउट्स एनी टाइम. क्लियर है? Ma'am, option D. ऑप्शन डी. बाकी बाकी स्टूडेंट्स, डी इज करेक्ट क्या? प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप. Yes, ma'am. प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप बच्चे. यस, डी इज करेक्ट. तो कैसे पहचानेंगे? हाउ कैन वी डिटरमाइन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? मैम अभी तो आपने ट्रिक बताई. 14 इलेक्ट्रॉन्स इवन है, डायमैग्नेटिक. 14 इलेक्ट्रॉन्स इवन, डायमैग्नेटिक. NO प्लस 14 इलेक्ट्रॉन्स एंड O2 नेगेटिव कितना हो गया? 17 इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक. Next one is the pair of species that has the same bond order in the following is. बताओ. Same bond order. Option C. सोच लो. ऑप्शन सी शिखा, कैसे बेटा? Ma'am, B. हाँ, बी. O2 में तो वो है ना बच्चे, 16 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 है ना. तो हाउ विल दे सेम ना? Yes, ma'am. इन NO2 ओके, इसमें भी कैसे होगा? 8 और 7 15 प्लस 1 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन. भाई कैसे हो जाएगा? O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, B2 में 10. कैसे सेम है ना? आंसर इज ए. बोथ आर हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन्स बच्चे. Yes, ma'am. क्लियर है? क्या गलती कर रहे थे? क्या मिस्टेक करी थी? नहीं पता? ओके. क्वेश्चन नंबर ये वाला करो. इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज and magnetic behavior changes from para to dia? Bond energy increase means, you know, this order, bond order is directly proportional to bond strength. You know, मैं बताना भी भूल गई अभी. And bond strength is directly proportional to bond dissociation energy and inversely proportional to bond length. याद है? Bond energy increases means bond dissociation energy increases. It means bond order increases. Answer is Option B. B. B कैसे होगा बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन है ना C2 में, तो चेक करो. एंड C2 प्लस में कितने? 11 इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्ड ऑर्डर तो कम हो जाएगा ना बेटा.
Ma'am, answer C. C. C होगा, because in NO there are कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे? 15, and in NO plus there are 14 इलेक्ट्रॉन. तो 15 से 14 आ रहा है, it means para to dia, and bond order for NO is 2.5, but for NO plus it's 3.0, है ना शिखा? Yes, ma'am. Is it clear now? Yes, ma'am. ठीक है, okay. Okay. Option A. अरे ये तो कितनी जल्दी बता दिया. He2 does not exist, है ना, because number of electron in bonding orbital is equal to the number of electron in anti-bonding. So the bond Anti-bonding. order is 0. It means molecule does not exist. Okay, do the next one. Right order of क्या लिखा है ये? Dissociation energy of N2 and N2 plus. चलो भाई, हो जाओ start. Answer A. पक्का? Yes, because bond order is directly proportional to bond dissociation energy. So bond order Yes, of N2 ma'am. is 3 and for N2 plus is 2.5. Then option A is correct. Option A. यार कितने इंटेलिजेंट हो ना. चलो ये 3 क्वेश्चन और कर दो, फिर तुम्हारी छुट्टी. Now you can leave the class. मतलब after when you attempt the question once, then you can leave the class. C2. D, ma'am. Very good. Sit2, है ना? Because in case of C2, the electrons are present in pi 2px and pi 2py. Fine. It means both bonds are pi bonds. क्यों? Because the electrons are present in pi orbital. Okay, which one is paramagnetic? Fast. देखते हैं कौन जल्दी पहले बोलता है. जल्दी, fast. Who will be the first one? N2Li2H2O2. Namrata, Aisha ma. C. Screen is not visible. Visible. Visible है बच्चा. Option is O2. बताओ which one is correct? Paramagnetic बताओ भाई. Aisha ma, tell me. Namrata, D. Shikha, Shreya. D, ma'am. Very good. O2 में क्या है? 16 इलेक्ट्रॉन. अभी तो बताया. The molecule, those molecule having 10 electrons, 16 electron and odd electrons belongs to paramagnetic. Clear है? Okay. Yes, ma'am. Okay, do the last one question. Decreasing order of stability of O2, O2 negative, O2 plus and O2 2 negative. Stability is what? Higher the bond order, higher will be the stability. Okay. Ma'am, D. Okay, D for dog, right? Ma'am, D. B या D? D. हाँ. D. ठीक है, actually ना I am little bit confused between B and D. ठीक है, yeah, D. How D? O2 में 16 electrons, it means bond order is 2. 17 electrons, it means bond order is 1.5. And 15 electron, it means bond order is 2.5. And in case of 18 electron, 1.0. So it means stability सबसे ज़्यादा O2 plus, है ना? Then O2, O2 negative and O2 2 negative. Finally, you have done all the PYQs. Are you all happy? Yes. Yes, ma'am. Okay, let me congratulate to you all. Yeah. Aisha ma, you are not happy. Yes, I'm happy. Please show me your happiness now. Shreya,
या ओके नाउ दिस इज योर होमवर्क. ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, करके आओगे. देयर आर टोटल 20 क्वेश्चंस, है ना? ठीक है, एंड इन नेक्स्ट क्लास we will start some important concepts of GOC, concepts of general organic chemistry. प्लीज घर से पढ़ के आना, ठीक है? रिवाइज द GOC, स्पेशली कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास? आई विल टेल यू बच्चा. इंडक्टिव इफेक्ट है ना, और हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन. ठीक है, ये पढ़ के आना. क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, दिस इज योर प्री वर्क. ठीक है, ओके. So thank you so much for attending the class, and congratulate and best wishes to all of you, and appreciate yourself बच्चे, because you have done all the PYQs. ठीक है, very good. ठीक है, okay. So I'll share the class notes in your group, and अच्छा ऐड हो गए हो क्या डाउट सॉल्विंग ग्रुप में? आयशा माँ, Yes, ma'am. ओके. नम्रता, श्रेया, शिखा, ओके. ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग. ओके, बाय एवरीवन. Okay, ma'am. Thank Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye bye. बाय.